Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2342 1050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I'm S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. Good evening, Harsh. गुड इवनिंग, नमस्कार. हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ. इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे. आज दिन रविवार का, और आज का दिन जैसा कि आप सबको श्रोताओं मालूम है कि हम म्यूचुअल फंड्स के ऊपर डेडिकेट करते हैं. म्यूचुअल फंड से जुड़े कोई भी सवाल हो, आप हमसे पूछ सकते हैं. 3 नंबर्स हैं हमारे पास खुले हुए: 23 31 44 44, 23 42 10 50 और 23 717 106. तीनों नंबर दिल्ली के 011 एसटीडी कोड के साथ इन पर डायल करें. म्यूचुअल फंड से जुड़े अपने सवाल पूछें. और हाँ, आपके सवालों का जवाब देने के लिए देश के जाने माने म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ हैं. धीरेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में. धन्यवाद हर्ष. शुरू करते हैं मार्केट मंत्रा का आज का अंक. सबसे पहले हेडलाइंस इंग्लिश में. The top stories. Foreign investors pump in nearly 4,000 crore rupees in Indian equity markets in the first week of April. And global crude oil prices rise for the third straight week. Both Brent and US crude jumped 6% this week. अप्रैल के पहले सप्ताह में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में 4,000 करोड़ रुपए निवेश किए. कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह वृद्धि. ब्रेंट और यूएस क्रूड इस सप्ताह 6% बढ़े. नए वित्त वर्ष की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव नोट पर हुई है. खासकर विदेशी निवेश के मामले में काफी ये नया साल उत्साहवर्धक रहा है. अप्रैल के पहले सप्ताह में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में 4,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं. अमेरिका में बैंकों के संकट पर लोगों की चिंताएं थोड़ी कम हुई हैं. साथ ही इस बात की भी संभावना बन रही है कि यूएस फेडरल रिजर्व आने वाले समय में ब्याज दरें बढ़ाने की रफ्तार कम करेगा. इसको लेकर निवेशकों में थोड़ा सा उत्साह बढ़ा है. और विदेशी पोर्टफोलियो की बात करें तो 3,747 करोड़ रुपए भारतीय इक्विटी बाजार में इन्होंने डाले हैं, जबकि डेट बाजारों से पहले सप्ताह के दौरान 2,067 करोड़ रुपए वापस निकाले. इस तरह अप्रैल में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में कुल विदेशी निवेश 1,671 करोड़ रुपए का रहा है. और इससे पहले मार्च महीने में एफपीआईज ने 6,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था. Right, and let's start taking phone calls and questions that we have received. We have actually received one question from Santosh from Ghaziabad, and he says that he has investments in Axis funds and they are not performing in the past few months. What should he be doing? I'm afraid we don't have the exact fund name, but Axis funds. Dhirendra, what would you say? No, even if you don't say, most of the I'm generally thinking that it is about the Equity funds. Yeah, equity. And most of the equity funds of Axis Mutual are not doing well, and they are not doing well for last not 6 months, about a year and a half or so. And about a year and a half or so, there was a change in the complexion of the market. What was driving it and what was dragging it. And what was dragging the market was, there was a theory that buy at any price. High quality companies buy at any price. And those are the companies which are, those occupy or dominate Axis portfolios. They are out of favor. They have corrected, and that is why you see the struggle. But Axis has faced this kind of dilemma 4 or 5 years back as well. And it was able to get out, wriggle itself out of it, or, things to turn around very well for that set of stocks. So it has been proved right in the past. I don't know how long will it take. About these companies,
I think that, I'm not trying to prejudge or, the strategy they're following. But what I understand after years of my own, closely looking at the market is that all strategies are cyclical. They do sometimes very well, and the reason why when they do exceptionally well is generally followed by a very bad period for that strategy, because the standard, reversion to mean of anything catches up. So I would say that if you have held it for so far, these are great companies, and which apparently, anybody can make a case that they're great companies, but not at these great prices. And now those great prices are not looking all that great. They are still expensive stocks, but they are not relative, but those are the kind of, those are the kind of relative expensiveness or, pricey stocks. They have always been great companies, great performance comes at a price, and they are lower than their long-term medium. So, I would say that if you have patience, hold on. One more important thing which I would like to say, that most investors, when they like a fund company or when they like a fund or when one of their fund has done well, they end up owning multiple funds. Spread your investment. If all your money is in Axis fund, move half of your money elsewhere. If a large amount of money is invested, make sure that it is not exceeding 25% of money. So that's about it. Have patience and spread your investment. इनके संतोष के क्वेश्चन का दूसरा पार्ट अब हम खोल चुके हैं. इसमें इन्होंने थोड़ी सी डिटेल लिखी है. इनके पास दो फंड्स हैं, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इसके बारे में आप समझकर बात ही कर रहे थे, और दूसरा है एक्सिस बैंकिंग एंड पीएसयू फंड. ये दो में निवेश है, और साथ ही इनका ये भी सवाल है कि अभी जो टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस हुआ है, ये डेट फंड है बैंकिंग एंड पीएसयू, तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें भी होल्ड करें या निकल लें? ये जो बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको इसका फर्क नहीं पड़ेगा. जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ है कि आपका मिलने वाला जो रिटर्न है उस पर इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा. अभी तक डेट फंड के लिए नियम ये था कि आप किसी डेट फंड में इन्वेस्ट कीजिए, 3 साल तक इन्वेस्टेड रहिएगा, जो भी आपका मुनाफा होगा उसको इंडेक्स करके जो मुनाफा है केवल उस पर आपको टैक्स लगेगा. ये इंडेक्सेशन की सुविधा भविष्य के निवेश के लिए खत्म कर दी गई है, लेकिन ये उन पे ही लागू होता है जो निवेश आपका 1 अप्रैल के बाद होगा, 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद होगा. तो अभी तक का जो आपका निवेश है उस पर पुराना नियम जारी है. इसमें आपको इंडेक्सेशन मिलेगा, 3 साल तक आप होल्ड करते हैं तो आपको, और इंडेक्सेशन की वजह से डेट फंड पे बहुत कम टैक्स लगता था. तो आप अपना निवेश जारी रखिए, ये अच्छा फंड है, सुरक्षित फंड है. और लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, उसके बारे में तो मैं बता ही चुका हूं कि अधिकतर इक्विटी फंड की स्थिति खराब लगती है, लेकिन इसमें बने रहना चाहिए. धीरेन्द्र, अभी आपने देखा कि सरकार ने कई जो छोटी बचत योजनाएं हैं उस पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, और ठीक ठाक बढ़ाया है. अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की भी बात करें, जिससे लोगों का तो फायदा होता है, सरकार का भी सीधा फायदा होता है, उसके पास पैसे आते हैं, सभी में बढ़ा है. तो आने वाले समय में क्या आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे इसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पे इसका बहुत भारी असर पड़ेगा. थोड़ा बहुत पड़ सकता है, लेकिन अभी भी ये जो छोटी बचत योजनाएं हैं, चाहे वो पीपीएफ हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो, बल्कि अभी ब्याज दरें तो बड़ी हैं. बजट में अनाउंस कर दिया गया था कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो अधिकतम निवेश 15 लाख संभव था, उसको बढ़ा के 30 लाख कर दिया गया था. जी. तो एक तो आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है. यहाँ पे सारे फिक्स्ड इनकम ऑल्टरनेटिव्स में सरकार को छोटी बचत योजनाओं पे सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, और सबसे ज्यादा रिटर्न सबसे अधिक सुरक्षा के साथ, सबसे सुरक्षित पैसा, अगर इस देश में अगर कोई सुरक्षित निवेश है तो आप इन्हें मान सकते हैं. और सबसे सुरक्षित निवेश में सबसे ज्यादा रिटर्न, ये मुझे लगता है एक आम आदमी को लुभाने की और वृद्ध आदमी को मदद करने का नजरिया शायद रहा होगा, और सरकार को पैसे की जरूरत भी है, और इसके वजह से सरकार एक तरीके का पैरेलल ट्रैक इंटरेस्ट का जारी रख पा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ हमारे यहाँ ब्याज दरें कम होंगी, और इसकी तुलना में ब्याज दरें कम है गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे. तो अगर आप और ब्याज दरें कम होंगी तो यहाँ पे पिछली बार आपने देखा था कि जब ब्याज दरें बहुत कम हो गई थी तो
इन छोटी बचत योजनाओं पे उस रफ्तार से इंटरेस्ट रेट गिरा नहीं था, कम नहीं किया गया था। तो कम नहीं किया गया लेकिन बढ़ाते समय बढ़ाया गया है, तो ये मुझे लगता है कि इनके लिए खासा एक काफी कंपैशनेट व्यू रखा गया है। और लेकिन म्यूचुअल फंड का इस पे खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तबके के लोग जो इनमें लगाते हैं वो म्यूचुअल फंड में खास पैसा नहीं लगाते। म्यूचुअल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का डेट फंड में जो निवेश था वो बहुत ही करीब करीब 8-10% है पैसा। Right. Let's take a phone call now. We have Hariharan joining us from Delhi. Good evening, Hariharan, and welcome to Market Mantra. I got two mutual fund, एक Mahindra Manulife Asia Pacific and ICI Balance Fund. So I just want to know what is the for right now the both the shares are in red. So what is about the future of this funds? About the balance fund, it is a fairly, conservative, well-structured fund. And Manulife Asia Pacific REIT fund of funds. I don't know why you have invested in the first place, because, this is something where, it's a real estate dependent fund. It's a very narrow fund. So I would suggest that, carry on with your balance fund, and maybe it is in red simply because your investment is not very old, and even the decline will not be as serious as an all equity fund. But this is one fund about which I really don't have much of a view. But generally, if somebody asks me that he wants to invest in this kind of fund, I would suggest him otherwise. Right, and before we move ahead, let's remind our phone numbers to our listeners who would have joined in after the start of the program. Our phone numbers are 2331-4444, 2371-7106, and our third line is 23421050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. And as you know, this is an interactive program. It's actually your program where you can participate and ask questions, put all your questions, queries and doubts to our expert and get solutions and answers. Let's move on now and take a look at some of the other news items that we are tracking for you this evening. Finance Minister Nirmala Sitharaman is on a visit to the US to attend the annual meetings of the International Monetary Fund and the World Bank. The meeting will be attended by finance ministers and central bankers from across the world. The meeting is scheduled to take place from Monday at IMF headquarters in Washington, D.C. On the sidelines of the meetings, Ms. Sitharaman will have bilateral engagements with her respective counterparts from G20 countries and heads of other delegations. Ms. Sitharaman and Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das will also jointly chair the second G20 finance ministers and central bank governors meeting on the 12th of this month. Around 350 delegates from G20 countries and 13 invitee countries and various international and regional organizations will participate in the meeting. Let's take our next caller. We have Sanjay joining us from Mumbai. Good evening, Sanjay, and what's it that you want to discuss? Sir, I am in highest tax bracket. After change in tax rule of debt funds, should I still do asset allocation and rebalancing between debt and equity funds, or should I invest only in equity funds? Yes, Dhirendra. He's already in the highest tax bracket. If you have been investing in fixed income fund, then it will have a bearing on that. The cost of investing in such a fund, your returns will come down. But it depends, what is your allocation to equity? What is your allocation to debt? If your allocation to equity is 75%, fixed income is 25%, and you have other fixed income investment, whether in the PPF, PA, things like that, or your employee provident fund account which is lying there. So consider those as fixed income as well and decide on your asset allocation. The reason why you do asset allocation is to reduce your overall investment risk, overall portfolio risk. And that you should consider doing. Doing it in a tax efficient way, you have two ways of doing it. One is to actually consider all these things so you can do it on the margin. You don't have to do your allocation to fixed income entirely through debt mutual fund. That is one.
There might be other vehicles, if you look at all the hybrid funds, which will still be, dominantly debt, but they will be treated, they will have the indexation benefit. They are worth considering. And to know where there are tools available, maybe Value Research Online itself, .com, you can set up your portfolio, upload your investments, and you will get precisely what you own based on the equity funds, debt funds, all the kind of bonds or debt, all kind of bonds or, small savings schemes. You will know how much of your money is in fixed income, how much of it is in equity. And if you have to do some asset allocation, you will get pointers. You don't have to necessarily do your allocation to fixed income through debt mutual funds. Right. And Nupur joins us next from Pune. Good evening, Nupur, and welcome to Market Mantra. Hello, Nupur. Do we have you online? Yeah, I'm here. Yeah, go ahead. Put your question. Good evening. Good evening. Yeah, I want to invest a sum of 10 lakhs for 5 years. Where should I invest? Need some safety and also some good returns. Okay. You are investing in market for the first time? Yeah, I am. Okay. I would say that, if you're investing for 5 years, consider some equity saving funds and spread the investment over the next 6 months. Because, if anybody investing for the first time, when he does that and a small decline, a 5% decline, will actually scare you quite a bit. So, I would suggest that start with equity savings fund, spread your investment over 6 months, and that's about it. Right. Yeah. And Dhirendra, as far as the markets are concerned, we have seen, tumultuous times, ups and downs, the Hindenburg report and the impact on Adani group of, companies. And also the recent, the monetary fund of, monetary review of the Reserve Bank of India. That was actually a surprise, And the street was expecting a 25 basis points hike, but that never happened. It was a pause. So given all these factors, what do you make of the markets in the short run? What I make of the market in the short run is that you can't make up. As you said that, street was expecting something else, and it has been proved wrong once again. Yeah, that's true. And in the last 7-8 years, all the big moves of the central banks, whenever we have seen a 0.5% move, most of the fund managers or most of the professional investors who are in the business of either anticipating or predicting or managing money or trying to anticipate the move, they have been proved wrong. All the big moves have, come as a surprise. So I would say that think like a real investor. Think like the previous investor, the person who is actually doing his asset allocation, who is worrying about reducing his tax bill, who is worried about optimizing his return on equity, who is focused on, reducing his risk in a methodical manner. That's about it. Focus on what is in your hands and don't try and predict all these things. They are unpredictable. They are and you have to settle with. Think of the interest, the tax rates or the interest rates. We have to live with it. We don't have a choice. धीरेन्द्र, हमारे पास एक और ईमेल आया है मार्केट मंत्रा में. ये गजेंद्र प्रसाद हैं जयपुर से, और ये पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में इनके काफी सारे इन्वेस्टमेंट हैं, उनमें फायदा भी हुआ है, फंड के नाम नहीं लिखे हैं. ये जानना चाहते हैं कि इसमें रिटर्न्स में 2 तरीके के कैलकुलेशंस आते हैं. एक XIRR है और एक सीधा कितना उनको अब तक लाभ हुआ है उसका प्रतिशत है. तो कैसे कैलकुलेट करें? थोड़ा एकेडमिकली वो जानना चाह रहे हैं कि क्या कैलकुलेशन का तरीका और कितना XIRR सही होता है. और आप XIRR है क्या ये भी बताएं. नहीं, मैं इसको सरल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, शायद इनको समझ आए. अगर आप 100 रुपया लगाते हैं और 3 साल के बाद आपका 100 रुपया बढ़ करके 300 रुपया हो जाता है, तो आपको 200 रुपए का मुनाफा हुआ. आप कुछ और इसका अगर आप सिंपल रिटर्न जोड़ेंगे तो 200 रुपए का फायदा 100 रुपए पे, ये 200% का रिटर्न है. लेकिन अगर आप इसकी चक्रवृद्धि ब्याज को अगर करेंगे तो आपको एक ऐसा प्रतिशत निकालना पड़ेगा कि 100 रुपया किस दर से बढ़ा, जिसकी की तुलना आप बैंक के दर से कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस के रेट से कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 8% मिल रहा है. कितना प्रतिशत आपका पैसा बढ़ता
कि उस बढ़े हुए पैसे पे 1 साल के बाद आपको जो ब्याज मिलता, उस वजह से ये 300 रुपया हो गया। ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये XIRR है, लेकिन ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं जब आप, ये तो मैं उदाहरण दे रहा था कि आपने एक दिन लगाया और एक दिन निकाला। जब आप हर महीने लगा रहे हैं, आप 10,000 रुपये से शुरू करते हैं, 12 महीने तक लगाते हैं, तो एक पैसा आपका 12 महीने लगा रहता है, दूसरा पैसा आपका 11 महीने लगा रहता है, तो आपका जो टाइम वैल्यू है उस पैसे का वो कम होता जा रहा है। और इस कैश फ्लो के आधार पे आपको किस तरह का रिटर्न मिला, और इस बीच में आप निकाल भी लेते हैं, कई बार निकाल भी लेते हैं, तो उस निकालने की वजह से तो आपका जो पूंजी निकल गया। तो इस पे अगर आप रिटर्न जोड़ना चाहेंगे तो इस पे चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने को XIRR कहते हैं। तो अगर एक बेहतर फंड का देखना हो कि ये फंड कैसा कर रहा है, तो उसमें XIRR का प्रतिशत देख सकते हैं क्या, इक्विटी फंड के लिए या डेट बैलेंस फंड के लिए? जी हाँ, मोटे तौर पे आपको ये देखना चाहिए कि वो जो XIRR आप देख रहे हैं, क्योंकि ये XIRR कभी कभी अगर ये नेगेटिव 5% की गिरावट भी हो जाए, लेकिन इस बीच में इस दौरान बाजार अगर 15% गिरा है तो आपका फंड शायद बड़ा एक बेहतरीन फंड है, क्योंकि बहुत कम गिरा है। लेकिन इसलिए इसको तुलनात्मक तौर पे आपको देखना पड़ेगा। लेकिन लोगों को तो एक चीज बारीकी से देखना चाहिए कि महंगाई दर से आपका पहला हर्डल है कि महंगाई दर से आपने ज्यादा कमाया, 5-6%, 7% अगर आज के दिन महंगाई दर है और उससे ज्यादा नहीं कमाया तो आपका पैसा कम हो रहा है, आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है। एक तो पहला ये चीज है। दूसरा कि आपके पड़ोस के बैंक में आपको कुछ नहीं किए बिना, कोई फंड में पैसा लगाए बिना, कुछ नहीं किए, कोई खास चुनाव पे ध्यान दिए बिना, आपको अगर जो रिटर्न मिल रहा है 1 साल के डिपॉजिट पे या 45 दिन के डिपॉजिट पे, निर्भर करता है कि आप कितने समय के लिए पैसा लगाते हैं, उस डिपॉजिट रेट पे आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप चिंता करें, लेकिन कम समय में भले ही नहीं मिले, लेकिन 2-3 साल की अवधि में तो आपको जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इक्विटी आपको उस तरह का रिटर्न नहीं देगा। पर मेरी एक स्टैंडर्ड उम्मीद ये रहती है कि जो कुछ भी आपको बैंक से मिल जाता है 5 साल की अवधि में, अगर आपको उससे 1.5 गुना नहीं मिला तो क्या ये उतार चढ़ाव झेलना वर्थवाइल है? Right. Let's move on and take our next caller. We have Bharat Bhushan joining us from Gurugram in Haryana. Good evening and welcome to Market Mantra. Yeah, good evening. I'm a senior citizen. Yes, sir. And I have invested for last 2.5 years in ICICI Prudential Banking Short-Term Fund. Mm-hmm. Now I wish to avail the indexation benefit after it completes 3 years in June, in the month of June. Okay. Right. Now is it better? I have 2 options. Either I do a systematic withdrawal from this. Is that better, or a full withdrawal from this fund, availing the indexation benefit and putting it in a senior citizen savings scheme with 8.2%? Which would be better? Okay. Look, if you don't need the money, don't pull your money out, because you are entitled to the indexation benefit till your money remain invested. The moment you take your money out and want to invest again in the mutual fund, you will lose this benefit that you have, that you are availing now and you are entitled to. So that is one, because mutual fund is a very efficient vehicle in terms of tax deferral. You are not liable to pay any tax, including the capital gains tax after indexation, till you realize it. So if you don't need the money and if you just want to move your money to senior citizen savings scheme, there is a reason why I understand the reason why you are asking that you will be getting 8.2%, and this is something where you can lock in for the next 5 years. So I'm very confident that even the ICICI Prudential Fund will be able to deliver you better, little more than what you will get in senior citizen savings scheme, and maybe even till now it has been able to deliver you more than that. So, maybe, once we are thinking in terms of, once we are hearing the noise that this is, interest rates will go down further, maybe you can consider amount up to 30 lakh rupees to be moved into senior citizen savings scheme, but not now. Right. Yeah.
Let's take some of the other questions that we have been receiving in Market Mantra. Dhirendra, we often receive questions from our listeners and investors asking, what exactly is the best way of investing in mutual funds? Is it through some app, or is it going on to the website of mutual funds and then investing, or through some intermediary of banks? Means, what would be the best way? It entirely depends. One is investing in funds through an app, through a mutual fund company, or through an intermediary, or through a bank has become very easy. But most importantly, you have to divide the whole investing process into two parts. You need advice, you need suggestion, you need someone's help in deciding where exactly to invest, and you don't know, you are not confident enough. Then you should go to a distributor, you should go to an advisor who will advise you and guide you through the whole process and also hold your hand. Investing itself has become easy. In about 15 minutes, if you have an Aadhaar card, online bank access and your PAN card, you can be ready to invest. But after the first KYC. But where to invest in all this, or go to an advisor who will advise you, and then if you are, tech savvy, enough tech savvy, and it does not require great sophistication. Everybody is able to use the app independently with little bit of, guidance, or even many of the interfaces are intuitive enough. So, if you don't need help, get started with the app which are enabling direct investment in the direct plan. If you need advice, then maybe, anybody, but try and keep it in the digital mode, because that way the money will be accessible much faster. Right. And Dhirendra, we all have grown up hearing the saying that a bird in hand is better than two in the bush. Given that kind of a background, how do we select between a growth option and a dividend option? Which one is better? I mean, how do we, take a call? No, one is that, you have to really look at it in terms of, this metaphor is fine that a bird in hand is better than the two in the bush. Yeah. The point is that, you need a bird which should be in your hand. When it comes to money issues, I think a part of your money should be in your pocket. A part of your money should be invested in the short-term investment. A part of your money should be invested in equity, because that turns out to be the best performing asset class. Right. A certain part should be invested in fixed income, even though you are investing for the very long run, simply to reduce the volatility or, provide stability to your portfolio. Right. These are principles which I don't think any investor should violate. Fine. Right. And let's take a look at the oil prices as well. Rising for the third straight week, global crude oil prices surged more than 6% this week after OPEC Plus, the Organization of Petroleum Exporting Countries and allies, including Russia, announced surprise production cuts and falling U.S. oil inventories against fears about the global economic outlook. Brent crude jumped 6% during the week at $85.12 per barrel, while U.S. crude also jumped 6% to close at $80.70 per barrel. आज के लिए मार्केट मंत्रा में इतना ही। धीरेन्द्र, आप हमारे साथ जुड़े और दर्शक आप लोगों ने भी हमारा साथ दिया सवाल पूछने में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। And before we close, a quick look at the top stories. Foreign investors pump in nearly 4,000 crore rupees in Indian equity markets in the first week of April. And global crude oil prices rise for the third straight week. Both Brent and US crude jumped 6% this week. अप्रैल के पहले सप्ताह में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में 4,000 करोड़ रुपए निवेश किए। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह वृद्धि। ब्रेंट और यूएस क्रूड इस सप्ताह 6% बढ़े। मार्केट मंत्र का अंक आज का यहीं समाप्त करते हैं। कल शाम 6:30 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी नए सप्ताह में नए इक्विटी शेयर बाजारों के कार्य दिवस के साथ। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार। Goodbye.